got me falling right back. Hello guys, I'm back with my another video. So as you know, tomorrow morning I'm going for a ride. This is basically the same ride where I ended my last video. So I've started my second video over here only. So as you all know, tomorrow morning I'm going for this ride. This ride is gonna be from Nashik to Lonavala to Pune to back to Nashik. Total it's exactly 480 kilometers. So it's gonna be really very fun ride. Now why I'm doing this ride? Because I wanted to do some long ride. Has been a long time. The last long ride which I did was in December, which I did my Chiplun ride. So I was really very missing long ride, so I planned this. Now I'm not going alone. I'm going with two of my friends, which I will introduce later in this video. So let me show you all the stuff which I'm going to carry with me. Here we go. So I'm going to take my Rhinox magnetic tank bag. Then I will be taking my XGI gloves. Then I will be taking this small Allen key set, as you can see over here, very useful. Then my Rhinox jacket. Then my that backpack, it's basically God's anti-theft laptop bag, so I'm going to carry that. My all the stuff like my tool set, my tire inflator will go inside that. My all the cameras, drones will go inside this. Over there my phone is getting charged. This is fully charged. This is getting charged. Now over here it's lots of mess. हर राइड से पहले ऐसा होता है, क्या कर सकते हैं. So as you can see over here, my intercom is getting charged. My both the drone batteries are getting charged. That's my drone bag, which is gonna go inside my tank bag. One more thing guys, this laptop is on from last 25 hours. Basically guys, yesterday night at 9 o'clock I started my editing of first video, which you must have already seen. Then there was some internet problem, so it took me more than 13 hours to upload this video. Then I started editing my second video, and now that is getting uploaded. So it will take more 2 hours to upload. The net speed over here is slow. Then over here my GoPro Hero 5 is getting charged. My SJ cam is getting charged. My Sony is getting charged. This is my drone. That's my second lens for my Sony camera. I'm going to take this Gorilla Pod also. And I also have to keep this tire inflator inside my laptop bag. So that's pretty much it about the stuff which I'm going to carry. So guys, whenever I go for a ride, a day before I give my bike a wash. आज भी मैं गया था अपने बाइक को वॉश कराने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया क्योंकि बहुत भीड़ थी और इतना टाइम भी नहीं बचा था कि मैं खुद से कर पाऊँ. तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं अपने बाइक का वाइज़र, हेडलाइट्स, मिरर्स और ये सब साफ़ कर दूँ. सो लेट्स डू इट. ऑलराइट गाइस, सब काम हो चुका है. मैंने अपनी गाड़ी पे थोड़ी साफ कर दी. मेरे सब चीज़ें भी चार्ज हो गए, बस सब पैक करना है. अभी गाइस मैं जाता हूँ, 3 से 4 घंटे की नींद ले लेता हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है. आप लोगों के लिए वो 1 सेकेंड है, इतना रहेगा. सो नाउ आई विल कैच अप वंस आई वेक अप. ओके गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस. सो नाउ आई एम ऑल रेडी एंड सेट टू लीव. राइट नाउ द टाइम इज़ 4:35. नाउ देयर इज़ अ स्मॉल इशू. अभी मेरे साथ टोटल 2 लोग जाने वाले हैं. अभी मुझे पता नहीं, एक ने तो फ़ोन उठा लिया है, दूसरे जो आतंक भाई हैं जिनको आपने पहले भी मेरे वीडियोस में देखा है, वो फ़ोन पिक नहीं कर रहे हैं. अभी मुझे देखना पड़ेगा कि वो आ रहे हैं कि नहीं. सो मुझे बहुत लोगों ने वार्न किया था कि वो सुबह नहीं उठेंगे. अभी देखते क्या होता है. तो अभी मैं फटाफट कॉफ़ी लेता हूँ, उसके बाद निकलते हैं. सो लेट्स गो. ऑलराइट गाइस, सो फाइनली आई एम लीविंग फ्रॉम माई होम. अभी मैं स्टॉप वॉच सेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करना है कि पूरा ट्रिप मैं कितने देर में करता हूँ. सो लेट्स डू इट. Let's go. बाय द वे गाइस, मैं आपको टाइम बताना भूल गया. तो इस समय टाइम हो रहा है 5:11. अभी मैं सबसे पहले जा रहा हूँ मुंबई नाका. भाई कुत्ते पीछे पड़ रहे हैं.
अरे यार मैंने फ्लाईओवर क्यों नहीं लिया? मुझे मुंबई नाका जाना था ना। यही होता है जब आप ब्लॉग करते हो, एक साथ आपका ध्यान इतने सारे जगहों पर रहता है कि कुछ ना कुछ भूल जाते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए सत्यम, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। By the way guys, as I told you, one of my friend is not picking up the call. He is still not picking up the call. अभी वहाँ पे जाके वापस फ़ोन करता हूँ। मेरे एक फ्रेंड ऑलरेडी पहुँच चुके होंगे वहाँ पे। ऑलरेडी गाइस, मैं मुंबई नाका पहुँच चुका हूँ, मेरे एक फ्रेंड भी आ चुके हैं। Alright guys, so right now we have come to this small टपरी called क्या है, देव प्रसाद। एक्चुअली में हम लोग आतंक भाई का वेट कर रहे थे, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। हम लोग ने यहाँ पे भी 4-5 कॉल किए लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। सुबह से मैं अराउंड उनको 25 कॉल कर चुका हूँ, कोई रिप्लाई नहीं। And I didn't call because I know he's not coming. हमारा लास्ट 1.5 महीने पुराना प्लान था। आशुतोष भाई का तो लास्ट मोमेंट प्लान बना कल ये आ चुके, वो नहीं है, ऐसा होता है। तो फिर अभी हम लोग यहाँ पे कॉफ़ी पी रहे हैं। मैं घर से कॉफ़ी लेके आया, घर पे एक्स्ट्रा था तो लेके आ गया। तो अभी हम लोग कॉफ़ी लेते हैं, उसके बाद हम लोग निकलते हैं। फिर डायरेक्टली अभी शाहपुर जाके रुकेंगे, जो कि लेफ़्ट टर्न जहाँ से हमें लेना है वहाँ पे एक बार वापस उनको कॉल करेंगे, क्योंकि यहाँ से शाहपुर आने के लिए उनको मैक्स 45 मिनट्स लगेगा। तो अगर हुआ तो हम लोग वहाँ पर उनके लिए रुकेंगे। सो या लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली वी आर लिविंग फ्रॉम हियर। आतंक भाई नहीं आए। यस गाइस, सो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। And here we go. And here we go. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year you'll reappear for no reason. But I'll cherish every day until you come my way this season. Alright guys, the ride is going awesome. We have completed 40 kilometers और जैसे कि आप देख सकते हैं धीरे धीरे उजाला हो रहा है। Talking about the climate, it's not too cold but it's pleasant. दोपहर में लगने वाली है, दोपहर में बहुत गर्मी हो जाएगी। So yeah, let's continue. Selling
सो गाइस यहाँ से अभी हम लोगों को लेना है लेफ्ट। क्या यहाँ से लेफ्ट लेना है ना? हाँ यहाँ से। मैंने आतंक भाई को फ़ोन तो किया, नहीं उठा रहे। नहीं उठा रहा ये होम चलते हैं। और अब अगर वो आएंगे भी तो बहुत लेट हो जाएगा। एक सुसु ब्रेक करते हैं। हाँ हाँ लेफ्ट ले लेते हैं, उसके बाद जंगल ही जंगल है। ओके सो गाइस ये है शाहपुर। ये नेशनल हाईवे अभी हम लोग ने छोड़ दिया है। मुझे शाहपुर के बारे में थोड़ा बहुत पता है क्योंकि मैं अराउंड 12 इयर्स पहले यहीं पे रहता था। सो गाइस एक्चुअली में कीड़े बहुत हैं मेरे हेलमेट के वाइजर में भरे पड़े हुए हैं। अभी मेरा ये वाइजर है इसलिए जैकेट पे और टैंक बैग पे तो नहीं आया, लेकिन हेलमेट पे भरे पड़े हुए हैं। तो अभी हम दोनों को लगी है सुसु, तो अभी हम लोग एक लेंगे छोटा सा सुसु ब्रेक और वहीं पे वाइजर भी क्लीन करना है। ये देखो बस वाले को, इसके बाप की रोड है। गाइस चेक दैट आउट। मत जा गया। अभी आएगा, वापस आएगा जैसे ये खत्म होता है। तो क्लाइमेट बहुत अच्छा है, ठंडी थोड़ी और होती तो अच्छा लगता। मुझे ठंडे में राइड करना पसंद है लेकिन गर्मी बिल्कुल नहीं पसंद। एंड गाइस चेक दैट आउट, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, ऑसम। लेट्स कंटिन्यू। एक्चुअली में गाइस प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ मैप मेरे पास है, मीन्स मोबाइल होल्डर मेरे पास है, इसलिए सिर्फ देख मैं सकता हूँ। वो कॉर्नरिंग, लेकिन टैंक बैग है नहीं कर सकते। तो अभी यहाँ पे ले सकते हैं, स्टॉप लेते हैं, थोड़ा फोटोग्राफी भी करेंगे। लगता है ना इंस्टाग्राम पे तभी तो अच्छे फोटोज अपलोड कर पाऊंगा। अरे रुक जाओ भाई, अभी नहीं लगी क्या सुसु? मेरे को फोटो खींचना है। ले ले। Wow, beautiful. मजा आ गया, एकदम मौसम राइड टिल नाउ। तो अभी हम लोग रुके हैं, थोड़ा सुसु वसु करते हैं, पानी वानी पीते हैं। या Search for affection, but searching isn't finding. Sit back, relax, 'cause love is blinding. Searching for affection, but searching isn't finding. Sit back and relax, 'cause love is blinding. Oh, 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 no. Oh, 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 no. Oh, oh, no. It's a